brought to you by SEDS Global Branding Private Limited and Deals Flow Franchising. Produced by Together Investing Club and Explorer Freight. In association with Capital One TV and Cloud Access. Ab Jeeto Bharat Ka Dil. Presenting the Great Indian Brands Show with Sudarshan R. Chitlu. Welcome back, viewers, to another episode of the Great Indian Brand Show with Sudarshan R. Chitlu. And today we are here with a diva who's in the business of creating more divas. India is going places with Gleam Diva Pageant Training Academy, and she is earning name all over the world. They have started internationally also, probably the very first institute, a beauty training, pageant training institute that has gone cross-border and also has opened a branch in Itanagar. The very first of its kind concept. With us is Preeti Vashishth Joshi, founder of Gleam Diva, who was once a diva herself because she won that pageant, and once a diva, always a diva. Welcome to the show, Preeti. So amazing to have you with us over here today. How has been your journey so far? It was good. And a lot of ups and downs were there, of course, because I was part of IT industry, totally different industry altogether. I worked with different organizations like Mercer, IBM India, Ericsson, World Network Services. And after spending 8 years in IT industry, I started looking for something, wherein I was feeling that I'm missing something. I should start loving myself. But then suddenly I saw this poster of Mrs. India. And then I realized, let's do it. So simultaneously, I did the competition of Mrs. India, then Mrs. Alliancia, Mrs. Tiara, and I won few of them. And then I realized that I'm loving this more than the IT industry. फिर मुझे लगा कि मुझे इसी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए, और तब मैं जब मिसेस इंडिया कर रही थी तो मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी, और मुझे लगा कि यहाँ तो कोई कोचिंग सेंटर है ही नहीं नॉर्थ इंडिया में. और देन सडनली इट केम इन टू माई माइंड दैट आई शुड लीव दिस आईटी इंडस्ट्री बिकॉज आई स्टार्टेड लविंग इट. सो मैंने फिर एकेडमी खोला ग्लीम दीवा के नाम से 2017 में. और and it was very quick question, it was very spontaneous decision. एकदम से कि मतलब करना है exactly. So फिर हमने ग्लीम दीवा एकेडमी खोला जो नॉर्थ इंडिया की नंबर 1 एकेडमी आज की डेट पे. एंड when we started in the field of pageantry, modeling and personality development. Now we have a lot of winners from our academy. There are established models. Yes. Absolutely. नहीं, मैंने काफी लोगों को सुना, and people have a lot of wonderful reviews about your institute, Gleam Diva. And the best part is that every woman, what I feel, is a diva in her own self. उनको लगता है. Now, it's a very controversial kind of a statement also, because being a man sitting over here, and the whole industry and everybody talks about, a woman is a diva. But what exactly a woman feels, I have, मुझे लगता है there are many dimensions to a diva. It's not only someone who is just, physically beautiful or appealing, but I think there is a different definition to a diva. And probably is that why you came up with Miss India Planet and Mrs. India Planet, the beauty pageant, competition that is so well known, and I think it's in the third year now. So yes, Diva, when I was part of IT industry, I was missing one side of mine, जो आपका self care, self love है, जो मैं अपनी academy के through और pageants के through भी promote करती हूँ. So basically हम लोग सब कुछ कर सकते हैं. We are multitaskers, we are handling our family, we are looking after the children, and then we are also going to office and earning, bread and butter for the family. बट इस भागम भाग में ना हम अपने आप को भूल जा रहे हैं. Absolutely. और वो बहुत ज़रूरी है, वो दीवा जो हम भूल गए अपने अंदर का, कि हाँ हमें भी अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए. तो आई थिंक वो स्पार्क को मैं इस पैजेंट्स और ग्लीम दीवा एकेडमी के थ्रू वो इग्नाइट करती हूँ. और जब वो उनके चेहरे पे वो स्माइल आती है ना, व्हेन आई सी देयर इज लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वो फील कर रहे हैं कि हाँ अब हमारी सेल्फ इम्पोर्टेंस भी है. तो दे आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स, दे आर डूइंग सेल्फ केयर. सो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट. जब आप अंदर से खुश हो, जब आप अपने लिए खुश होते हो, तो अब आप सराउंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है. That is what is the, I think that is the point you're trying to make. क्योंकि it's not only with women, it's also with men that I have seen that, एक acceptance का एक बहुत
एक अंदर से चाह होती है हर एक में, और उनको होता है कि पहले, क्योंकि सबसे पहला एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन फैमिली से ही होता है, एग्जैक्टली, यू नो, द वेरी फर्स्ट ऑडियंस आपका आपकी खुद की फैमिली होती है, एंड समटाइम्स इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर पीयर्स, योर रिलेशंस, नॉट ओनली द वंस हु आर योर ब्लड रिलेशंस लिविंग इन द सेम हाउस। मेरे हिसाब से इंसान बाहर जाके सिंपैथी या खुद की पहचान तब बनाना शुरू करता है जब उसको फैमिली के अंदर वो पहचान नहीं मिलती है, आई थिंक सो। और जब फैमिली ने पहचान दे दी है तब वो बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर जाता है, कोई भी, और लेडी शी विल गो आउटसाइड और वो अपनी पहचान बनाएगी। हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन, क्योंकि आप खुद भी, यू नो, आप यू शेयर्ड अ पिक्चर विद मी, यू नो, व्हाट यू वर 8 years ago, and looking at that and looking at you now, viewers, you can look at the screen, the transformation that Preeti has brought in herself. I mean, it's 360 degrees, you know, U-turn in your life. और आपके पास इतनी सारी contestants, women, you know, even you know, married and unmarried दोनों आते हैं. How has your experience been? और आप क्या देखते हैं इस सब? एक्चुअली आपके जो फैमिली वाला एस्पेक्ट है ना, मैं इस पर पहले बहुत गौर भी करती हूँ और बात भी करना चाहूँगी। सो बेसिकली देखिए, हम लोग एक्सेप्टेंस लोगों से सीख करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात है, आप अप्रूवल्स मत लीजिए, आप अप्रूवल्स मत लीजिए कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। पहले आप अपने को एक्सेप्ट करिए और खुद डिसीजन करिए कि आपको ये अच्छा लगता है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो एक्सेप्टेंस है, पहले आपको खुद अंदर लाना पड़ेगा। और जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे करना है, इवन इफ माय फैमिली इज़ सपोर्टिव और नॉट, मुझे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मुझे करना है। आई हैव टू गो फॉर मिसेस इंडिया, और मे बी आई हैव टू गो फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फॉर माई सेल्फ। Once you decide it, then you don't take approvals. You know, you just don't seek approvals from anywhere else because you've approved of yourself. लोग कहेंगे, अरे why are you doing this Mrs. India? क्या ज़रूरत है? Why are you going for modeling field? Why you want to go for DVC ads? Because आपको अच्छा लगता है, आप खुद के लिए कर रहे हैं. Why are you seeking approvals from anybody else? Like from family members or family or relatives? ये तो पहली बात है. फिर फैमिली का सपोर्ट होना आपको थोड़ा डिसिप्लिन देता है। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन देता है, आपको कुछ टेंशन नहीं रहती है दिमाग में, आप उसको बहुत खुल के करते हैं, एंजॉय करते हैं प्रोसेस को। तो फैमिली का आप कन्विंस करिए, अगर नहीं होगा सो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम आप स्लोली ग्रेजुअली वो धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करेंगे। व्हेन आई स्टार्टेड, लकीली माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव एंड ही टोल्ड मी दैट अगर तुझे करना है, द नेक्स्ट डे यू जस्ट रिजाइन एंड स्टार्ट विद योर ओन जर्नी, एंड आई डिड एग्जैक्टली सेम। बट अगर वो नहीं भी करते, then also I have made, you know, I prepared myself. You had made up your mind that you would set that off I on want that to go journey. for it. Yes, absolutely. And you see the result. Abhi everybody is so, you know, proud of me because I have started, you know, I have two franchise now in Itanagar and Mauritius. Then we have Miss and 2 national pageants. And the beauty is you yourself are proud of yourself of what you have achieved till now, and your onward journey is also very clear where you're going to head forward now, right? और सबसे प्राउड मुझे फील होता है क्योंकि मैंने वो जर्नी, वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद का किया। अब वो जो समय मुझे लगा इतने ईयर्स, अब वो मैं क्विकली, मैं अपनी, जैसे आप, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम and there are other members also, like for example my forte is that I focus on postures, dining etiquette, social graces. You help us with your communication skills. Then we have Seema, Namrata, so we have different trainers for everything. So now what we are doing, we are collectively working on the women transformation and making them empowered. So I think वो journey जो वो होता है ना, वो हम सबको satisfaction देता है एक फीस से ज़्यादा, right? So वो इस चीज़ को मैं एंजॉय कर रही हूँ आज की डेट में। अगर आप मुझसे पूछें मैं क्या एंजॉय कर रही हूँ, वो मैं स्माइल, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो उनको अच्छा फील होता है, जो उनका जो दबा हुआ एक वो होता है ना कि नहीं कर पा रही हूँ मैं, हाँ, अब वो बाहर निकल के आ रही है, दे गेटिंग विंग्स. They're adding wings to their future, and, you know, taking the flight where in the direction that they have always wanted headed to. Absolutely. Right? So इस पूरे, you know, journey के दौरान there would have been many ups and downs. How difficult was it? क्योंकि you know there are many people. I know viewers, there are बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हमारे दर्शक हैं. There must be many other people who must be actually, you know, trying to set up these academies. Even pageant holders, जिन्होंने किया है कि maybe they want to bring a transformation in the people. And this is such a wonderful concept. क्योंकि see, what I personally feel
it's not just about taking part in a beauty pageant that you need to go to a pageant training academy. They teach you etiquette, they teach you communication skills, they teach you dressing skills, they teach you presentation skills, they tell you how you can live your life complete, and that would help you, transform into a complete human being. I'll not say women, because it is equally important for men as well, that there are so many communication coaches, there are so many counseling, there are spiritual coaches, happiness coaches. आजकल ये इतना ज़्यादा हो गया, and we are a land of 140 crore people, and we need 1,000 Preetis over there who can actually bring this transformation along. So उन सब के लिए मैं आपसे, I would like to ask, what is it that you would say to them who want to build up these kind of academies or help people around and do something? आपने क्या struggles face करी थी इसके अंदर? So पहला क्वेश्चन जो आपका है कि struggles of course, खुद आप इस जर्नी में इवॉल्व होते हो, आप अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हो. अगर मैं नहीं करती तो अगर मैं 1 साल में छोड़ दी थी, 2 साल में छोड़ती, बिकॉज देयर वर अदर सुपर मॉडल्स ऑल्सो इन दिस इंडस्ट्री हु हैव देयर ओन पैजेंट इंस्टीट्यूट्स, बट स्टिल कमिंग फ्रॉम द IT बैकग्राउंड और इस इंस्टीट्यूट को नंबर 1 पे लेके जाना, एंड द लॉट ऑफ पीपल हु आर एसोसिएटेड नाउ was a very challenging task of course, क्योंकि आप सुपर मॉडल्स के साथ compete कर रहे हो और लोग ऐसा कहते हैं compete कर रहे हैं. आई थिंक सब contribute कर रहे हैं. सबसे पहले एक तो ये लेना पड़ेगा कि आप जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री में, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इट्स नॉट अ कंपटीशन. इट्स सच एन अमेजिंग थिंग जो आपने बोली है. It tells me a wonderful story that I would like to share, and I said it in another episode also. Remember the story of pollinization? एक किसान होता है, वो गन्ने का वो भुट्टे का खेत उगाता है, corn, and he has the best corn available, and he's always winning the world championship. और लोग आके उससे all his neighbors, they take the seed from him and he gives the seed freely. And जब कोई उससे पूछता है कि यार ये तो आपके कंपटीशन है, तो वो कहते हैं कि अगर मेरे आसपास के खेत में इसी क्वालिटी का नहीं आएगा, then my quality will also go down. So that is what you're telling. It's such an amazing thing. Yes, one is this the contribution जिसने मुझे अपनी स्ट्रगल से बाहर निकाला बेसिकली. क्या होता है कि आप दूसरे साइड, आप ये क्या बिजनेस कर रहे हैं, आप ही जैसा बिजनेस कर रहे हैं, उनसे आप सीखते हैं और वो मोटिवेट करते हैं कि आप और ऊपर उठो, क्योंकि आपको लगता है कि हम भी अपनी बेटर सर्विसेज दें. जब वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, व्हाई डोंट वी गो बेटर इन आवर सर्विसेज. सो उसमें क्या होता है कि यू लर्न, they are contributing, then you are also contributing, and then you also enjoying the process. आप खुद भी करना चाहते हो, तो you are also learning at the same time, YouTube से, and then other workshops also. Absolutely. Right. So I think वो struggles कम हो जाती हैं जब आप ऐसा environment देखते हैं अपनी इंडस्ट्री में. जब आपके पास लोग आते हैं, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, never stop in your journey. आपको काम करते करते एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा. वो एक्सपीरियंस आपका, आप ये लगा लीजिए, स्किल सेट आपका बहुत ही बढ़ जाएगा. तो वो एक्सपीरियंस, आप कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस देन प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस. This is what have helped me out. So I have a very dear friend. His name is Dr. Vikram Munshi. He's a doctorate in management, and he always says this statement. He has, it's a copyrighted term. The program that he has, White Space Consulting and Capability Building, is his company. They are one of the topmost healthcare management companies in the country today, among the top 10. He says he has a program called Will, Skill and Drill. You have the will, but you need to have the skill as well. But having the will and skill is not enough. You need to go through the drill, and that's what Preeti is telling me. Consistency is very, very important. Yes. रोज सुबह सूरज उसी समय उगता है और रोज शाम को सूरज अस्त भी होता है. तो it is very important, and और ये सदियों से चल रहा है. It is consistency. That is what keeps the planet together. And if you follow this kind of a system in your own life, you will also have a bright future rising every day, and you will be having a very good night's sleep each time the sun sets. I think that's what Preeti is telling. Yeah. So how did Itanagar happen? And you've gone cross border also. I think outside India also आप लोग अभी start करने वाले हैं. We just started, yes, absolutely. सो बेसिकली ग्लीम दीवा इतना वर्ड ऑफ माउथ सुदर्शन सर फैल गया, इतना ज़्यादा लोग प्रमोट करने लगे कि हमें और आप देखेंगे कि इंडिया से बाहर भी अगर कोई सर्च करता है तो वी ऑर्गेनिकली वी आर कमिंग ऑन द नंबर 1 पोजीशन. सो इट्स जस्ट दैट जो भी आप कर रहे हैं, sometimes people are taking fees but they're not giving that kind of service which is required. Absolutely. आप एक भरोसा करके कोई आपको फीस दे रहा है और आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इट्स बेटर यू गिव योर 100% टू इट.
तो हम वही कर रहे हैं और उसकी वजह से हम ईटानगर वालों ने अप्रोच किया बिकॉज हमारा काफ़ी has the biggest ramp. yes I heard. yes Yeah. it's 80 feet long academy and yes so basically वहाँ पे भी हमने यही कॉन्सेप्ट शुरू किया and in north east you know I was totally surprised people are so innovative creative and they are more inclined towards this industry Absolutely, modeling and it's one of the pageantry most beautiful they want parts to be of the part country. of Yeah. yeah To all my brothers and sisters and friends from the northeast, yes you guys rock. Simply, Yes, that's one of the absolutely. most amazing, regions of India. And my wife comes from northeast, so I'm Yeah. more in love with you all. Yeah. Yes, absolutely. So when I went there and so much energy and so much confidence you get from the people and that's how आप जब struggles की बात कर रहे थे आपके students ही आपको इतना अच्छा feel कराते हैं आपको उनसे भी सीखने को मिलता है वो confidence gain होता है कि now we are improving and lot of people are trusting us. When you have such a responsibility on your shoulder then you have to be It automatically, Yeah. opens doors and Yes. it makes you calmer. It makes you think Yes, in 10 different yes. dimensions, and that Yeah. that reflects in you. When I met you last time, and that is a few days ago. Yeah. And what about the international borders that you Yes. crossed across So the country? basically, so we got a call from Mauritius also, and I don't know how because I was also surprised that outside India people are coming to us and they want to take our branch or something like that. And I just asked them how you come to know about us. So some again word of mouth. So word of mouth तभी फैलता है जब आपकी सर्विसेज आप वो चीज़ें दे रहे हो उससे ज़्यादा दे रहे हो जो आपने प्रॉमिस किया है क्लाइंट को. सो आई थिंक ये नाम देखिए पैसा कमाना आसान है लेकिन नाम बनाना बहुत मुश्किल है. Asset develop करना. That is the entire हमने thing. नाम बनाया पैसा तो फॉलो करेगा Yeah, yeah, yeah. तो आई थिंक वो पैशन हमारा मॉरिशस तक भी पहुंचा एंड वी गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड यस सो आई मीन इन द मंथ ऑफ नवंबर वी आर गोइंग like we have to coach 250 students and along with me That's outstanding. Yes. It's Absolutely. a huge contribution, 250 Right. students. Believe me, matlab, you're actually transforming the lives of 250 people over there. 250 students and along with me we are taking communication coach and acting coach also. Okay. Because we have segregated our roles, so we together will be coaching them. So Gleam Diva not only trains on you to walk, Yeah. the ramp Yeah. or set the ramp on fire, but actually set the road on fire. मैं आपको all your life, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. सो बेसिकली हम लोग को लोग सोचते हैं वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू पैजेंट्री एंड मॉडलिंग. नो, सो बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो ग्लीम दीवा ऑफर करता है आई बेट कि आपको ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शायद ही इतना पैशनेट पीपल के थ्रू मिले. बिकॉज हम लोग का क्या है कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कराते हैं तो हमारा जो स्केल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इट्स हियर. हमने अब एक लेवल सेट कर दिया है और वो जो एंजॉय फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज कमिंग टू मी एंड ही इज शी जस्ट वांट टू लर्न हाउ टू वॉक फेमिनिनली इन हील्स तो हम कैटवॉक की बहुत सारी वेरिएशंस जो एंजॉय करके आप प्रोसेस को सीखते हो. Absolutely. जो नेचुरल हो जाए उनके लिए. Exactly. So posing है, dining etiquettes है, we go to 5-star property, we all have we focus on all meals. UK style, US style, so continental American style, yeah. So I think वो जो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, इम्बाइब करते हैं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी अब हमारे को बहुत अच्छा जाना जाता है. मॉरिशस में भी हम यही लाइफ स्किल्स दे रहे हैं उनको और उस प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हमने मॉडलिंग और एक्टिंग के भी कुछ स्किल्स डाल दिए हैं. एंड आई टेल यू व्हाट, जो लोग शाय होते हैं ना आप उनको कम्युनिकेशन ऐसे प्रैक्टिस कराओगे तो नहीं होगा. बट अगर आप एक्टिंग के थ्रू उनको इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को एक्सट्रोवर्ट कन्वर्ट करोगे वो बहुत ईजी हो जाता है. They pick up very fast because they're doing something really special, innovative, creative, something that they would enjoy. So हमने अपने करिकुलम को इतना इंटरेस्टिंग वे में लॉन्च कर दिया है कि सारी चीज़ें अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आ रहे हो तो यू विल नॉट गेट बोर. आपको मज़ा आता है. पीपल आर कमिंग फ्रॉम लास्ट 2 years. अगर कोई 2 साल पहले भी ज्वाइन किया था तो अभी हमारे पास क्या होता है लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है. तो दे आर कमिंग अगेन एंड टेकिंग कोचिंग फ्रॉम अस एंड दे आर जस्ट सिटिंग एंड enjoying and being they just want to be a part of that process. Wonderful. That's so amazing. And now even some really amazing important celebrities and people are attached with Gleam Diva Academy. I heard that Dr. Madhu Chopra, Dr. Neetika Modi, people of such order are along with you. How cool is that? I mean, that must have been
Everest climb, according to me. Absolutely. When I started with no experience, starting my journey with the competition, a simple competition, then taking coaching from abroad, I went to London just to learn how pageantry and modeling is working, how I can mingle national and international concepts. So when I just started with zero, and now when I'm sitting with them, because they are part of our pageant, they are coming for judging and all, and they are very helpful. Dr. Madhu Chopra, she's so sweet, and Dr. Wonderful Nitika lady, Modi yeah. also. And sitting beside them is itself a It's an honor in itself. Absolutely. Yeah, so I feel very overwhelmed, and the kind of response we are getting from such celebrities. And again, that's what I'm saying you. So वो जो struggles आपको दिखती है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, it because just ऐसे evaporates exactly. in thin air, it dissipates over there once you get in touch with such people. And so that is this is just a beginning for Gleam Diva. I would say it's just been 6 years since the Academy has founded itself under the guidance of Preeti Vashishth Joshi and co-founded by her husband Rajat Joshi. We are so glad you're here with us, and we wish you the best of luck on your onward journey. Or like acting and all, she said. On a lighter note, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जब आपको ऑफिस से छुट्टी चाहिए होगी ना, तो वो सरदर्द का बहाना सिंपल सा नहीं चलेगा. So I'm just kidding, but then that's the kind of confidence that you would get when you get in touch with someone like Gleam Diva. We have Preeti over here. So thank you, Preeti, for this thing, and a real big thanks for the pageant that you have come up with, Miss India Planet, Mrs. India Planet. It is giving a new lease of life to so many people. Thank you so much, Preeti, for your presence on this show. Again, Sudarshan Ramakrishna Chetlur over here. T-Gibbs, that is the great Indian brand show with Sudarshan R. Chetlur. जुड़े रहिएगा, like it, share it, comment कीजिए, and if you have a brand that can set on fire, come here. Together we'll do that on stage for you and spread it across the nation. Don't forget. Thank you. It's rocket launching day, right on, it's time to play. All set, ready to go, far away to the show. Dressed up in silver suit, climbing up the crest.